नमस्कार, सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन करते आ रहे हैं। अभी दूसरे अध्याय का अब 46वां जो सूत्र है वहाँ से हम लोग आरंभ करेंगे आज। उससे पहले मैं मंगलाचरण कर लेता हूँ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। आइए हम अपनी पतंजलि योग सूत्र की स्टडी फिर से आरंभ करते हैं। पिछले सप्ताह हमने 45 सूत्र तक पढ़ लिया था, जिसमें वो कह रहे थे बाय सैक्रिफाइसिंग ऑल टू ईश्वर कम्स समाधि। सो इससे आगे हम पढ़ते हैं। स्थिर सुखम आसनम। Posture is that which is firm and pleasant. So इसमें थोड़ी सी परपोर्ट उन्होंने लिखा है, explanation by Swami Vivekanand ji. Now comes asana
posture. Until you can get a firm seat, you cannot practice the breathing and other exercises. The seat being firm means that you do not feel the body at all. Then alone it has become firm. But in the ordinary way, you will find that as soon as you sit for a few minutes, all sorts of disturbances come into the body. But when you have got beyond the idea of a concrete body, you will lose all sense of the body. You will find neither pleasure nor pain. And when you take your body up again, it will feel so rested. It is the only perfect rest that you can give to the body. When you have succeeded in conquering the body and keeping it firm, your practice will remain firm. But while you are disturbed by the body, your nerves become disturbed and you cannot concentrate the mind. We can make the seat firm by thinking of the infinite. We cannot think of the absolute infinite, but we can think of the infinite sky. Number 47. प्रयत्न शैथिल्यांत समापत्तिभ्याम. By slight effort and meditating on the unlimited posture becomes firm and pleasant. So they're saying by slight effort and meditating on the unlimited, meaning the consciousness or super consciousness, unlimited posture becomes firm and pleasant. Light and darkness, pleasure and pain will not then disturb you. Number 48. Tato dvandva nabhighatah. Seat being conquered, the dualities do not obstruct. Dvanda is duality. Nabhighat, meaning there is no ghat, there is no टक्कर किसी चीज के साथ नहीं है. Seat being conquered, the dualities do not obstruct. The dualities are good and bad, heat and cold, and all the pairs of the opposites. Number 49. Tasmin sati shwasa prashwasa yogartavichedah pranayamah. Controlling the motion of the exhalation and the inhalation follows after this. When the posture has been conquered, then this motion is to be broken and controlled, and thus we come to pranayam, the controlling of the vital forces of the body. Prana is not breath, though it is usually so translated. It is the sum total of the cosmic energy. It is the energy that is in each body, and its most apparent manifestation is the motion of the lungs. This motion is caused by prana drawing in the breath and is what we seek to control in pranayama. We begin by controlling the breath as the easiest way of getting control of the prana. यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बता दी है कि भी द breath, the air, breath is not the prana, but prana is everywhere. We just get the breath into our lungs, and then once we
try and control that breath, then we call it pranayama because we consider that to be prana, life giving, 50. Bahyabhyantara stambhavritihi deshakala sankhyaabhi parishto dirgha sukshama. Its modifications are either external or internal or motionless, regulated by place, time, and number, either long or short. Okay, a little explanation here. The three sorts of motion of this pranayam are: one by which we draw the breath in, another by which we throw it out, and the third action is when the breath is held in the lungs or stopped from entering the lungs. These again are varied by place and time. By place is meant that the prana is held to some particular part of the body. By time is meant how long the prana should be confined to a certain place, and so we are told how many seconds to keep on motion and how many seconds to keep another. The result of this pranayam is udghat, awakening the kundalini. Yeah. Number 51. Bahyabhyantara vishayakshepi chaturtha. The fourth is restraining the prana by directing it either to the external or internal objects. This is the fourth sort of pranayama. Prana can be directed either inside or outside. Number 52. Tatah kshiyate prakashavaranam. From that, the covering to the light of the chitta is attenuated. The chitta has by its own nature all knowledge. It is made of sattva particles, but is covered by rajas and tamas particles, and by pranayama this covering is removed from the chitta. Number 53. Dharanasu cha yogyata manasah. After this covering has been removed, we are able to concentrate the mind. Okay. Number 54. Swasva vishaya samprayoge chittasya swarupanukara ivendriyanam pratyahara. The drawing in of the organs is by their giving up their own objects and taking the form of the mind stuff. Okay. Explanation. These organs are separate states of the mind stuff. I see a book. The form is not in the book. It is in the mind. Yeah. Something is outside which calls that form up. The real form is in the chitta. These organs are identifying themselves with and taking the forms of whatever comes to them. If you can restrain the mind stuff from taking these forms, the mind will remain calm. Yeah. This is called pratyahara.
Thence arises supreme control of the organs. When the yogi has succeeded in preventing the organs from taking the forms of external objects and in making them remain one with the mind stuff, then comes perfect control of the organs, and when the organs are perfectly under control, every muscle and nerve will be under control, because the organs are the centers of all the sensations and of all actions. These organs are divided into organs of work and organs of sensation. When the organs are controlled, the yogi can control all feeling and doing. The whole of the body will be under his control. Then alone one begins to feel joy in being born. Then one can truthfully say, "Blessed am I that I was born." When that control of the organs is obtained, we feel how wonderful this body really is. Yeah, so in this one, as we were discussing that example of Yashji brought up about the screen and all the figures on the screen, and just like in this one also, Swamiji said, if you have a book in hand and you're reading about something, then that picture comes in your mind. It's not in the book, that's just a word there but the picture comes in your mind. So he's saying that the chitta itself has everything already, just like Vinitji was saying, it's all up there, nothing it lacks nothing that it has to complete. So it's just we have to realize that chitta has it, so so we control the control by taking the mind off those visions or those things. And then जस्ट लाइक आपने कहा सिनेमा हॉल में अगर बैठा है बंदा तो देख रहा है मूवी को, अगर उससे उसको हटाना है, all they have to do is just close the eyes and go inwards, and then there's nothing out there. And if they have taken one part of that scene or something and they are internalizing it, it's inside there now. So it's out there, it's in there, it's everywhere. you know it's amazing stuff. But we have to use this pratyahar very seriously. These yogis are very big on that. This is called pratyahar. Thence arises supreme control of the organs. So pratyahar is not only things and stuff, it's also mentally giving up stuff, not just physically. Physically के तो चाहे पड़ा हो, but mentally is more important. चलिए, तो we have completed the second chapter or second अध्याय of Patanjali Yoga Sutra. नंबर 55 तो नहीं किया ना अभी? हाँ जी, there are 55 sutras in many versions of Patanjali Yoga Sutra. The 55th sutra is Tatah Parma Vashyatendriyanam. Pratyahar results in the absolute control of the sense organs. Swami Vivekananda has not commented upon this sutra. ये भी उन्होंने लिख दिया. अच्छा, ओके. So what exactly does pratyahar mean? थोड़ा सा simple language में समझा दीजिए. Yeah, so pratyahar is a non-possession, जैसे simple word में बताया non-possession, but it is non-possession of everything, including
including our thoughts. When we start meditating and we do dharana on one object, in this case we are doing on our breath dharana, uh, and as Yatinji ji mentioned before, that at one point we have to let go of that as well, when we are able to, have no thoughts at all, even without concentrating on the breath. That is the stage we want to reach to in our meditation, because that's a success of our meditation. So So, that's the best uh, way way to show that you're practicing this pratyahara, because now you don't have any thoughts whatsoever. Total pratyahara, giving up all kinds of connection to everything, giving up connection to everything basically. See, he's used here the word withdrawal. I like that personally. Withdrawal. Pratyahara is the withdrawal of the senses from the objects by following the essential nature of the mind. Essential nature is to think, but if you can withdraw from that with a conscious, Why? you can't force it. It's a consensuous Yeah. things. It happens प्रैक्टिस when it happens. प्रैक्टिस इसीलिए तो वो मेडिटेशन के लिए ये सारा जो धंधा किया हुआ है इन्होंने पतंजलि योगा सूत्र में इसीलिए किया हुआ है कि यू यू हैव टू ब्रिंग योर माइंड टू स्टैंड स्टिल, लाइक just empty of all the thoughts, and that is the stage when you are going to get some help from the creation, from the system, to make you more in tune with the higher consciousness, or you could say consciousness. I think it is detached. Any? I think it is detachment. Yeah. Get detached from everything if you are attached, even if you are attached to the world, to the society, but you should be detached side by side. Yeah. Detachment is a big part of Bhagavad Gita. It's every few shlokas, the word comes up, detachment. You have to have detachment. Yeah. हाँ जी विनीत जी. देखिए एक चीज मुझे उस पर नहीं समझ, इसमें लिखा है द ड्राइंग इन ऑफ द ऑर्गन्स इज बाय देयर गिविंग अप देयर ओन ऑब्जेक्ट्स. यहाँ तक तो ठीक है, यू गिविंग अप द ऑब्जेक्ट्स एंड यू आर ड्राइंग इन द ऑर्गन्स ऑफ ऑफ सेंसेस एंड टेकिंग द फॉर्म ऑफ द माइंड स्टफ. ये नहीं समझ, ये पार्ट नहीं समझ आ रहा है. Yeah. Drawing in of the organs is by their giving up their objects and taking the form of the mind stuff. This part very Yeah, I think he is referring to the universal mind. लेकिन ऑर्गन कैसे, हाउ ऑर्गन विल टेक द फॉर्म ऑफ द, ये तो एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है बहुत. मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की, नहीं समझ आ रहा. I mean, how will the organ take the form of the mind stuff? From taking these forms. Clear नहीं आ रहा. अच्छा हाँ, if you can restrain the mind stuff from taking these forms, the mind will remain calm. So वही मैं बता रहा था ना कि जैसे आप बैठे हैं मूवी में, अब आपने देख लिया, कोई दृश्य देख लिया, कोई एक्टर या कोई सीन वो आपके सामने आ गया, एंड इट्स वेरी वेरी जिसको मेमोरेबल सीन है वॉट एवर, वो आपने अपनी आंखें भी बंद कर दी ना, अब वो सीन वो दिमाग में घूमता जा रहा है. दैट्स हाउ वी आर ऑल ड्रीमिंग ऑल अबाउट स्टफ, वी डू ऑल डे, रात को वो ड्रीम चलती रहती. सो अब उसको वो कह रहे हैं कि somehow you have to take the mind off that. That's all he's trying to say here, looks like. So उसके लिए
वही मेडिटेशन ही रेकमेंडेड है, एंड उसके जो स्टेप्स बताए हैं वो फॉलो करने हैं, और उसके बाद फिर जस्ट थॉट्स को स्टिल करना. तो इट्स द सेम थिंग दैट व्हाट वी डूइंग बाय मेडिटेटिंग फॉर अ फ्यू मिनट्स हियर, बट उसी को परफेक्ट करते जाना है, ताकि वी रीच द स्टेज वेयर totally all the thoughts are gone for a longer and longer period of time of our meditation. ये नहीं कि अभी अभी थोड़ी सी चलेगी, फ्यू सेकंड्स के लिए फिर और थॉट्स घूमने लग गई. उसी को जितनी ज़्यादा उसकी ड्यूरेशन हम बढ़ा सकें, दैट विल बी द सक्सेस ऑफ द मेडिटेशन. टाइम हो गया 3:53. So we go to chapter 3 now, and this chapter is called Vibhuti Pad, the chapter of powers. तृतीय. एक क्वेश्चन है कि ये हाँ जी. इंद्रियों को वश में करने का क्या मतलब है, या विड्रॉल ऑफ द सेंसेस का क्या मतलब है? ये है तथा परमा वश्यते इंद्रियाणाम. इंद्रियों को वश में करने का क्या मतलब है? क्योंकि बगैर इंद्रियों के तो डेली गुजारा ही नहीं है. अब रोटी में स्वाद नहीं आएगा तो हम रोटी कैसे खाएंगे? या बाहर घूमने जाएंगे, नेचर को एंजॉय करना है तो आइस का लेना पड़ेगा. अच्छा म्यूजिक सुनना है तो कानों का सहारा लेना पड़ेगा. और शरीर में जो गंदगी पैदा होती है उसको धोना पड़ेगा रोज. तो इंद्रियों के बगैर तो गुजारा ही नहीं है. तो इंद्रियों को वश में करने का क्या मतलब है? अच्छा पॉइंट दिया आपने. तो यहाँ पर जो इंद्रियों को वश में करने की बात कर रहे हैं, दैट्स इन कॉन्टेक्स्ट विद द practice of meditation, because practice of meditation, and after we succeed with everything, then of course we have more control over our indriyas for us to use them in a more जिसको बोलते हैं discriminating way. Discriminating way, yeah, that's a good word. Discriminating way, rather than willy nilly, और जो मन में आ गया बस वही अभी ये करना ही है, मैंने ये खाना ही है, वो चीज़ आपकी कंट्रोल में आ जाएगी. And that is the side benefit from it, उसका side effect है, but actually it's just meant for meditation. So इंद्रियों को वश में करने का, उनकी सेंसेशंस जो है ना, वो उसकी बात कर रहे हैं कि जब आप बैठते हैं मेडिटेशन में तो सेंसेशंस, यहाँ पेन हो रही, वहाँ ये हो रहा, वहाँ ये हो रहा, ये सब चीज़ें पहले करती हैं. बाद में देन वंस यू परफेक्ट योर मेडिटेशन और योर आप आसन पक्का कर लेते हैं, देन दोज थिंग्स आर मिनिमलाइज्ड और गॉन. विनीत जी, या बताइए. To answer Yash ji's question, कि क्यों कंट्रोल करना है इंद्रियों को, हाँ जी. क्योंकि इसका मैकेनिज्म क्या है, उसको to cognize an object, what is the mechanism? Consciousness is shining on the, it is, consciousness is shining, it is illumining your mind. The illumined mind is giving the reflected consciousness to the organs, sense organs, इंद्रियां जिसको कहते हैं. Through the illumined sense organs, they are able to cognize the outside world. जैसे बाहर एक पेड़ है, there is a tree. So the tree, the eye looks at the tree, that indriya, that it looks at the tree. And when it looks at the tree, it creates a vritti in the mind. It travels from the tree, the light from the tree is coming, it's coming into your eye through that organ, sense organ, and it is reflected on the mind as a vritti. The mind is like a lake, as they say in yoga. It's like a lake. It creates a ripple in the lake of the mind. That ripple creates a vritti, and the consciousness recognizes that vritti as that object, the ped hai wo. That vritti is recognized as a tree by the consciousness. So
So if you are controlling the idea of meditation is कि आपको वृत्तिज आपको निकालनी है दिमाग मन से जो है. So उसको निकालने का एक तरीका है कि आप organs को ही control कर दो ताकि वृत्ति आए ही ना. Your eyes, your ear, your sense of smell, your memories. Memory is also vritti. जो memory आप जैसे example दे रहे थे कि आपने picture देखी और आपको scene याद आ गया. That's a memory. That creates a vritti also in the lake of the mind. Imagine a very still lake. Mind is a very still lake. और आपने कोई भी इंद्रिया जो भी चीज perceive करती हैं, that creates a ripple in the mind, in the calm mind, in the lake of the mind. And that vritti is picked up by the consciousness. तो आपको उसको शांत करना है. You want to minimize the vrittis ताकि आप you can reach the state of maybe having one last vritti left, and then you can see the screen as you were saying. Not you can't see it, of course, because it can't be seen, but it will reveal it. It will give you a sense that yes, So that is the mechanism. That's why you have to say control the senses. They are the mechanism. They are part of the mechanism of creating the vritti. So आप उसको control कर लेंगे तो vritti भी कम हो जाएगी automatically. या जो कि उसका ऑब्जेक्ट ही है वृत्ति को कंट्रोल करना. And the other method of controlling the vrittis is to focus on only one thing. जैसे breath का कहते हैं कि you focus on the ingoing breath and the outgoing breath. Why are we doing it? Because we want to make sure there is only one vritti left in the mind, and that is just the breath. बाकी सब, and when the mind focuses only on one vritti, it forgets all the vrittis. बाकी vrittis जो है शांत हो जाती हैं. Because it's focusing, it can focus only on one thing at a time. And So the thing is the mind, that make it calm. So you're either through the sense organs or by focusing only on one thing. So that is the mechanism. So the thing is, the meditation practice is a formal practice for 10 minutes, 20 minutes, half an hour. Rest of the 11, 12 hours that I am awake, what do I do with the senses? Surinder ji ne abhi book kaha ki discrimination. Is it similar to mindful living? कि मैं पड़ोसी के यहाँ मर्सिडीज देखता हूँ लेटेस्ट मॉडल, तो मेरे मन में अगर विचार आता है कि मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए, तो उसको मैं थोड़ा सा शांत करूं, और जो मेरे पास करोला है उससे कहूं कि मेरा हिसाब चल रहा है, गाड़ी चल रही है, let me just be satisfied with that and not be tempted. Is it controlling of temptations? Is it controlling of जैसे पहले वो मिनिमलिस्ट की बात हुई थी, that I don't really need a $20,000 sofa, I can do with a $2,000 sofa. Is it similar to that, or is it something different? I'm trying to understand. You hit the nail on the head. When you say that I don't need anything, who's the I who doesn't need anything? Is it your body mind complex? आपका जो the ego है उसको क्या कहते हैं, individual self है, he needs, he's the only one who needs it, So long as you are identifying that you are the body mind, that will have a need, because it feels separateness everywhere. जो चीज बाहर दिखता है वो कहता है it is separate from me and I should have it. He wants to have possession of something which is different from itself. But once you get the recognition that you are not that body, you are not the jivatma, you are the consciousness. But consciousness को कुछ चाहिए नहीं. It has everything. In fact, everything is happening in consciousness. So then you don't need anything. So it's a question of placing your identity. When you say I don't need anything, it's your consciousness which doesn't need anything, because it has everything. It is the one who has created you also. When you say I need something, just recognize who's saying that I need something. It is your jivatma which is saying I need something, not consciousness. And you are consciousness. Once that discrimination gradually sinks in, then the needs also, the desires go down bit by bit. It's an attrition process. And that creates the organs also, the organs of senses. Once you know who you are, you know that you are not the organs. You are not the organs. You are the consciousness which is illuminating the organs through the mind. The illumined mind is illuminating the organs, and the illuminated organs are cognizing the outside world. So you keep that mechanism in mind, and things will calm down. सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं? Well, I think this intellectual can get very complicated. It's much simpler than that. And I'm only talking about myself. I'm not saying anything. So what I do is I do practice, and I've been doing for many years. I don't focus too much as that this has to be that. I try to. There comes a state when my inertia is almost there, is nil, and in a good state.
So this practice itself, when I walk out the street and do it, it always helps me. That sense of discrimination. Okay, you're driving Mercedes. I'm happy for you, but it's how can I say? Naturally, it minimizes your hopes and the desires. It naturally does. It's not something you have to say, okay, take a whip and kill him. No, it naturally allows. That's what I find with myself. Now, brings contentment, brings gratitude, and where it has come from. Otherwise, I did not know. That practice itself is self-propelling. It gives you all this. Now, not that I don't get tempted, but I have the ability now to look at it. Okay, Viniji has got $1 billion. I'm grateful that he's got it, but I'm happy as well. I do not, naturally, I'm not looking beyond, just experiencing, okay, this got it, but then what? It does not, I don't have to follow that. That's the great part of it. So I thought I'd share my own experience that it does evolve. I mean, when you're doing meditation, it's not a small thing. It's a huge change. Forget God out of this altogether. On a human level, it brings to a state of tranquility, equipoise. And that equipoise itself is when you are totally withdrawn. You can't be totally withdrawn from your mind easily unless you all the way. But what it does, it's got virtually least amount of influence on what you're doing. So it brings you that Satchidanand state sometimes. And so all I'm saying is, there's a mind, it thinks. It doesn't know what it thinks, good or bad. But जब ध्यान करते हो, it balances the thing. And when you get out of it, like today we're going to do that, try that. And at the end of it, you feel suddenly, oh God, I'm a good human being. So I don't need to, this is my practice. What I do, my guru taught me, and it keeps me in a good note. And that's good enough for me. भगवान मिल जाएंगे, बहुत अच्छा, नहीं मिल जाएंगे तो भी बहुत अच्छा. Yeah. Right. Well, that's a good one, and that car analogy actually also strikes me because I said Mercedes. yeah, no, I was driving my Nissan Rogue, and in front of me there was a Porsche Macan. I'm saying, well, that looks nice car, very expensive though. But then the next thought comes to my mind, ah, I don't need it. It's just gonna get me from A to B, which I'm doing in my Nissan Rogue. That's fine. I'm not bothered. Uh, and uh, uh, and then there is a small piddly car, and then I'm not really drawn towards that. I'm not thinking, just like, for a moment the thought came, oh yeah, Porsche, yes. But the other one, don't even ignore it, so our tendency as a jiva, it seems that we are drawn towards bigger and better, bigger and better. And what can be bigger and better than what Vinitji is saying? Yeah, just conscious, the consciousness itself. जैसे उसमें कहा कि हम शिवम, मैं ही शिव हूँ. So once you are at that stage, then everything is yours. सब कुछ अपना ही है भैया, जो मिल जाएगा सब अपना ही है. वो पोर्शे भी अपनी है, ये भी अपना, वो भी सब अपना ही है. It's just a comment. दिमाग में आया. It's the beginning of understanding. The beginning of understanding is I am Shiva, or I am consciousness. Yeah. But when the ultimate understanding comes, you say everything is Shiva. That is the ultimate understanding, and that's what we should strive for. Everything is Shiva. Yeah. On a funny note, आप कह रहे थे ना कार का, मेरे पास है, this is about 12 years old now. तो उसमें सुबह मैं घर में सारे ना walk around, prayer करता हूँ, हर चीज को. And कार को भी मैं करता हूँ. मैंने कहा देख, मुझे और नहीं खरीदनी, बस तू ही रह जा, मैंने चले जाना है. हैप्पीली करता हूँ उसको. आई लाइक दैट. तो ऐसा है कि ये जो चीजें ना, मन की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है. You can have $1 billion and can be miserable like hell.
सबसे अच्छी चीज है ना, ग्रेटिट्यूड एंड संतोष, उसमें रहना, वो बड़ी किस्मत से मिलता है, बहुत किस्मत से मिलता है. That's, I want to remind you, each one of you. See, I live by myself. Every morning I have to remind myself, what do I do today? वही इंद्रियों का कंट्रोल है. तो ऐसा है कि ये जो है ना, ये कृपा जो है छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी है. It wipes all kind of things very easily. So वो कैसे होगी, वो जो कृपा आएगी तभी आपको मालूम होगा. बट कीप ऑन, लाइक इन्होंने कहा था ना, एक बहुत अच्छा लफ्ज कहा जो मुसलमान कहते हैं, इंशाअल्लाह. उसका मायना तो बहुत अच्छा है ना, कि भगवान के ऊपर सब छोड़ दो. हम करते हैं सदगुरुनाथ महाराज की जय. आई मीन एनी प्लेस आई फाइंड इफ इज आई जस्ट टॉक, मीन ग्रेटेस्ट इज दैट वन. वो जो एक ही काफी है. यू डोंट नीड मेनी ऑफ दीज, एज लॉन्ग एज यू बिलीव फ्रॉम योर हार्ट. दैट्स द, यहाँ से आए जब, एक तो होता है ना, यहाँ ये जो है, यहाँ से जो निकलता है ना, वो सच्चा भी होता है. तो इसे प्रैक्टिस. उषा जी हंस रही हैं. ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है. मन की गति न्यारी है. प्रैक्टिस करने से, मेडिटेशन करने से, भजन कीर्तन करने से अपने आप ही कंटेंटमेंट आनी शुरू हो जाती है. जी. जैसे आप कार की बात कर रहे, बच्चे कहते थे मम्मी तेरे को ये चाहिए, मम्मी कंटेंटेड एज लॉन्ग एज द कार इज वर्किंग, चलने दो बस, तुम लो जो लेना है, मेरे को मैं ठीक हूँ, मैं हैप्पी. तो ये तो टाइम तो जरूर लगेगा कंटेंटमेंट के लिए, और अंदर से ख्याल आते हैं. ये कोई किसी के कहने पे या करने पे कह दो इंद्रियों को कंट्रोल कर लो, कहना तो बड़ा आसान है, पर ये कैसे होंगी, किसकी होंगी, कब होंगी, ये तो फिर अपने अपने हर जीव का, हर आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना ही है. तो कंटेंटमेंट आनी अच्छी बात है. कंटेंटमेंट आ जाती है, टाइम जरूर लगता है. कंटेंटमेंट आ जाए तो फिर इधर इधर आपकी इच्छाएं भागती नहीं है ना. मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं चाहिए. जो ठीक है, जो प्रभु कर रहा है अच्छा ही कर रहा है. या चलिए. दीपक जी, There's something I have noted in all our scriptures. इसमें ग्रेस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं दिया हुआ है. हालांकि गीता में है, at one point he says by my grace you will, लेकिन बहुत कम एम्फेसिस दिया गया है ग्रेस के ऊपर, कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं और बाय गॉड्स ग्रेस, जैसे कंटेनमेंट बाय गॉड्स ग्रेस. ग्रेस बहुत, मतलब एम्फेसिस बहुत कम दिया गया है. इट्स, आई डोंट नो हाउ फार ग्रेस प्लेज अ रोल इन आवर evolution. Yeah. So yeah, you're more aligned to the Sankhya yoga philosophy. I know that. You and Yatindra ji also now, which he wasn't before, but now he is too much aligned to Sankhya yoga philosophy and Advaitvad. Yeah. No, that's okay. That's the higher standard, but yeah, for us as jiva, we always look to the grace of the Supreme Lord, whoever it may be, Lord Krishna, Lord Rama, Narayan, whoever it may be. We are drawn towards that. We need the grace to get ourselves out of this delusion and make ourselves worthy of ourselves, basically. Ourselves, I'm saying ourselves because right now we are thinking I am this, I am that, but in fact I am the pure consciousness and not this body. So that is the thing that we have to work on, and until we solidify that within our ग्रेस भी और फॉरगिवनेस भी, as qualities कहते हैं कि as the prerequisites for going into yoga and all is that for forgiveness, forbearance, ये सब है दिया हुआ कि you should develop these qualities, forgiveness. But there is no forgiveness from Ishvara. ये क्यों anomaly है कि that the individual self is being asked to develop qualities of forgiveness and forbearance. लेकिन there is no concept of forgiveness in our scriptures कि माफ कर दिया भगवान ने हमें. माफ नहीं है, कर्मा तो करना ही, मतलब
वो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं लगा आपको कि as an individual we are encouraged to have forgiveness, forbearance, Yeah. सब कुछ और ये contentment, लेकिन forgiveness ईश्वर कभी forgive नहीं करता है. Does he forgive or does he never forgive? No, ईश्वर वो forgive नहीं करते, वो कृपा करते हैं. He doesn't forgive. कृपा नहीं तो होती फिर as an individual self क्यों हमें कहा जाता है scriptures में कि you should have qualities of forgiveness. आप inculcate करो forgiveness. ईश्वर ने जो कर्म का सिद्धांत बना के छोड़ दिया है, तो उसमें ईश्वर ने कहा है आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड. Yeah, I am not involved in. Once But- you are taking birth and then you getting influenced by things and then it's your karma. नहीं मैं वो समझ रहा हूँ. कर्मा, the law of In the karma is end, that as you said, it's I know, leela. I fully understand that. Yeah, But I'm saying at the individual level, yeah, the sages or the scriptures are telling you to have forgiveness, yes. that quality of forgiveness. लेकिन ये quality of forgiveness is not in the Ishvara who has created all this. Yeah, well, no, I mean, you will see there are so many instances of in Mahabharata the stories that जब शिशुपाल के साथ क्या हुआ था, भगवान कृष्ण ने कहा, yeah, I'll forgive him, I'll forgive him in fact 100 times, but as soon as his 100 number is over, he is gone. सुदर्शन चक्र जाता है उसके ऊपर. Right? So, I mean, जब भगवान So we अवतार as लेते हैं humans should तब, have the same quality. We should not forgive. no, that is going to rebound to us as a pain for us, while we are living. So I think forgiving is very important. for Forgiving our own peace. and for your own peace, yes, for your own peace. For our peace, not for others. जब It's not तक for हम others. forgive नहीं करते, हमें पेन होती है कि इसने मेरे साथ ये किया. Yeah. वो पेन खत्म करने के लिए हमें उसको माफ करना चाहिए. ये याद ही नहीं रखना है कि नहीं, उसने मेरा भी वही क्वेश्चन है कि ईश्वर को पेन क्यों नहीं होती है, हमें होती है पेन. ईश्वर में ईश्वर को पेन नहीं होती कि ईश्वर मैंने में माफ कौन नहीं सी किया. जान है? ईश्वर में थोड़ी जान है. जान नहीं, बट ही इज द ईश्वर ने तो हमें जान दी है. क्रिएटर. माया तो ईश्वर ने ही बनाई है. ही हैज क्रिएटेड जान अस. नहीं है, उसमें ही क्या इज आवर पेन? क्रिएटर. उसने He has no the body. creation is always बॉडी में आया similar था, to the जब creator, आया था तब creation तो होती है. पेन हुआ. He reflects the अब वो creator. बॉडी से बाहर है तो उसको पेन It's कहाँ just a thought. I'm sorry, I just digressed. It's something to think about. Yeah, you digressed a big time this time. अच्छा, उषा जी कुछ कह रही? मैं कह रही थी फॉरगिवनेस तो तभी हो सकती जब अपने मन को समझाया जाए कि इसके कर्म का फल इसको मिलेगा, तो फॉरगिवनेस आप अपने आप ही देना शुरू कर देंगे. उसका कर्म उसको भोगना पड़ेगा. उसने किया है उसको भोगना पड़ेगा. जब ऐसा ख्याल आएगा तो आपके मन से जो फॉरगिवनेस ऑटोमेटिकली मिल गई उसको. ठीक है. जब ख्याल ही नहीं आएगा तो फिर तो आप उसका कहोगे रिवेंज करनी है, उसको ये करना है, वो करना है. अपने मन में आप ही ख्याल लाना पड़ता है. किसी ने नहीं आपको भेजना. वो ख्याल आपके अंदर से ये आवाज आएगी या अंदर से ख्याल आएगा कि जो वो कर रहा है उसके कर्म उसको मिलेंगे. तू Yeah. बंदे तू क्यों चिंता कर, तू अपना कर्म कर. अपना कर्म ठीक होगा तो सब ठीक ही रहेगा. या नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट बताया. जो क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस है ना, उनमें ये जो कर्मा का सिद्धांत है इज नॉट एज प्रोमिनेंट. सो कर्मा का भी है उनमें. कर्मा का भी है, बट इतना वो प्रोमिनेंस नहीं देते. वो उनको लगता है कि वो वी गोना बी ब्रांडेड हिंदू और वो समथिंग, इफ वी कीप ऑन सेइंग कर्मा का. So they don't publish as much, publicize as much as about karma and all that. So, but they keep on telling every one of their, disciples, you must forgive because. नहीं, वो तो ज्यादा ही एम्फेसिस देते हैं फॉरगिवनेस पे. बट आई एम जस्ट सेइंग जैसे ग्रेस है, ईश्वर की ग्रेस, तो वैसे एक सेकंड में parole फलानी जी को ना आंसर कर दूं.
हरिओम। हाँ जी, आई एम बैक। देव जी को लिंक चाहिए था, इस भेज दिया उनको। या सो वेयर वर वी? चैप्टर 3, 418 हो गए। चैप्टर 3, the chapter of powers, Tritiya Vibhuti Pad. We have now come to the chapter which is called Chapter of Powers. Sutra 1, Deshabandha Kshittasya Dharana. Dharana is holding the mind onto some particular object. Dharana, concentration, is when the mind holds on to some object, either in the body or outside the body, and keeps itself in that state. So धारणा कई प्रकार की होती है, जैसे सामने मोमबत्ती जला के रख ली और उसी के ऊपर ध्यान किया, या even on a plain sheet of paper, just a little dot. Some yogis do that and they just concentrate on that. I've seen so many different kind of practices that yogis do, but this one, the breath part, dharana, that is recommended even in the Bhagavad Gita. दूसरा सूत्र, सेकंड, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम. An unbroken flow of knowledge to that object is dhyana. An unbroken flow of knowledge to that object is dhyana. The mind tries to think of one object, to hold itself to one particular spot, as the top of, at the top of the head, as the top of the head, the heart, etc. And if the mind succeeds in receiving the sensations only through that part of the body and through no other part, that would be dharana. And when the mind succeeds in keeping itself in that state for some time, it is called dhyana, meditation. Number 3, tad evarth matra nirbhasam swarupa shunyam iva samadhi. When that, giving up all forms, reflects only the meaning, it is samadhi.
Let's read that again. When that giving up all forms reflects only the meaning, it is samadhi. Okay, that is when in meditation all forms are given up. Suppose I were meditating on a book and that I have gradually succeeded in concentrating the mind on it and perceiving only the internal sensations, the meaning unexpressed in any form. That state of dhyana is called samadhi. Can't understand. धारणा क्या होता है? धारणा जो एक चीज के ऊपर आप ध्यान लगा रहे हैं, तो वो धारणा, किसी चीज को धार लिया हमने कि हमने इसके ऊपर ध्यान लगाना है, राइट? कोई भी चीज आपके सामने हो या आपके अंदर हो, बॉडी के अंदर भी हो, उस पे उसको भी आप धारणा बना सकते हैं। जैसे हम श्वास को बना लेते हैं, अभी जब मेडिटेट करेंगे तो हमने अपनी आती जाती श्वास के ऊपर उसको धारणा बना लेना है बेसिकली। तो उसी पे अपना ध्यान केंद्रित रखना है, तो पर वो रहता नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि इधर उधर दूसरी थॉट्स आती जाती हैं। जब तक वो दूसरी थॉट्स आती जाएंगी तब तक हमारा ध्यान परिपक्व नहीं हुआ, राइट? जब वो दूसरी थॉट्स हट गई, सिर्फ सांस के ऊपर ही ध्यान हमारा जम गया, तब उसको कहेंगे कि ध्यान प्रॉपर हो गया, ध्यान। तो धारणा हमारी श्वास, ध्यान उसके ऊपर कंसंट्रेशन। नंबर 3, तद एवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। When that giving up all forms reflects only the meaning, it is samadhi. Number 4, trayam ekatra sanyam. These three, when practiced in regard to one object, is samyama. So, trayam ekatra samyama. When all these are practiced together, which is dharana, dhyan, samadhi, that is referred to as sanyam. When a man can direct his mind to any particular object and fix it there and then keep it there for a long time, separating the object from the internal part, this is sanyam, or dharana, dhyan and samadhi, one following the other and making one. The form of the thing has vanished and only its meaning remains in the mind. जैसे हमने धारणा उस पे की, श्वास पे की, and slowly that dharana is fading out, only we have that feeling that we are breathing. That's it. Then it's a proper samadhi. Number 5, tajjat pragya alokah. By the conquest of that comes light of knowledge. So pragya is there is a light of knowledge, and tajjat, after that, when one has succeeded in making this sanyama, all powers come under his control. This is the great instrument of the yogi. The object of knowledge are infinite and they are divided into the gross, grosser and grossest, and the fine, finer and finest, and so on. This sanyama should be first applied to gross things. When you begin to get knowledge of the gross, slowly by stages it should be brought to finer things.
Number 6. Tasya bhumishu viniyogah. That should be employed in stages. This is a note of warning not to attempt to go too fast. Number 7. Trayam antarangam purvebhyaha. These three are nearer than those that precede. The explanation is, before these we had the pranayam, the asana, the yama and niyama. These are external parts of these three: dharana, dhyan and samadhi. Yet these later even are external to the seedless samadhi. When a man has attained to them, he may attain to omniscience and omnipresence, but that would not be salvation. These three would not make the mind nirvikalpa, changeless, but would leave the seeds for getting bodies again. Only when the seeds are, as the yogi says, fried, do they lose the possibility of producing further plants. These powers cannot fry the seed. Yeah, so he is saying you get powers from doing the dharana, dhyan, samadhi, but those powers will not fry the seed of thought. For that you have to progress to the stage of nirvikalp samadhi. Those are different kinds of samadhis, and those will be explained further in this chapter. Number 8. Tadapi bahiranga nirbijasya. But even they are external to the seedless samadhi. Compared with the seedless samadhi, therefore, even these are external. We have not yet reached the real samadhi, the highest, but to a lower stage in which this universe still exists and we see it, and in which are all these powers. Number 9. Vyuthana nirodha sanskara yora bhibhava pradurbhavo nirodha kshana chittanavyo nirodha parinamaha. By the suppression of the disturbed modifications of the mind and by the rise of modifications of control, the mind is said to attain the controlling modifications following the controlling powers of the mind. That is to say, in this first state of samadhi, the modifications of the mind have been controlled, but not perfectly, because if they were, there would be no modifications. If there is a modification which impels the mind to rush out through the senses and the yogis tries to control it, that very control itself will be a modification. One wave will be checked by another wave, so it will not be real samadhi. When all the waves have subsided, as control itself will be a wave, yet this lower samadhi is very much nearer to the higher samadhi than when the mind comes bubbling out. So we are at 431. Yes, so we stop here. धारणा का मतलब संकल्प हुआ ना? है जी? धारणा का मतलब तो संकल्प हुआ. संकल्प
इस कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं संकल्प है, इसमें तो धारणा ही है, क्योंकि हमने सिर्फ मेडिटेशन के लिए ये एक चीज को माइंड में रखा है, राइट। संकल्प जब आप करते हैं तो वो एक तरह की धारणा है, बट दैट्स मोर टुवर्ड्स द कर्म कांड, that sort of thing, sankalp. Okay, that word is used in context with the karma kand. यहाँ पर जो यूज करते हैं ये धारणा ही यूज करते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। So any questions or comments up to now? Because we're gonna stop here. We've completed number 9 sutra of 3rd chapter. दीपक जी कमेंट ये है जी कि ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, ऐसे लग रहा है Very true. ऊपर से निकल गया सब, और मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ कि मैं तो शरीर हूँ, तभी मैं वो आसन कर सकता हूँ, तभी मैं प्राणायाम कर सकता हूँ। अगर मैं ये विनीत जी की बात सुनूं, कहूँ कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, तो प्राणायाम कौन करेगा, धारणा कौन करेगा? नहीं, वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, that is also necessary. This is, all are necessary. सब कुछ जरूरी है, सारी दवाइयाँ चाहिए। It's not easy. Not easy. वो भी ज़रूरी है, बिकॉज अभी तो हम अपने आप को जो एक्सपीरियंस शरीर में ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या अपने आप के लिए हम वो ध्यान कर सकते हैं कि भी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैंने उसको विचार को परिपक्व करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, और कई बार हो भी जाता है, और वो हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए, और व्यवहार में आ जाता है कई बार, बट कई बार सोहम भी वही है, सोहम भी वही है कि आई एम कॉन्शियसनेस, सोहम, बेसिकली सेइंग द सेम थिंग, डिफरेंट वर्ड्स। या सोहम भी वही है, एग्जैक्टली। इसीलिए तो वही मंत्र जी एक शेर याद आ रहा है, वो शेर ऐसे है जी कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। हाँ, अच्छी बात है। I am living in the world, but I am not running after the world. I see things, but I have no desire to possess them. That's very good. आपको शेरों का बहुत शौक है। ये आप व्हाट्सएप में डालिएगा जरा, I'll like to remember this. बहुत ही अच्छा। मैं दीपक जी को ईमेल में भेज दूंगा ये शेर और 2-4 और शेर, क्योंकि व्हाट्सएप में यूज नहीं करता, और I cannot send email to everybody. I can send it to Deepak ji. If he passes those, then he can decide whether to forward them. Deep meaning है शेर का, बहुत, you can extract a very deep meaning in what you have said. Yeah. ये तो आपकी बातें सुन के spontaneously आ गया है. I had not planned this. It just appeared from somewhere based on the company that I'm keeping right now. आपका शौक तो है ना, आप पढ़ते रहते हैं शेर और शायरी। आपने इतनी तारीफ कर दी है, मैं एक शेर और सुना देता हूँ। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। बड़े सुकून से जिंदगी में रहता हूँ, बड़े सुकून से जिंदगी में रहता हूँ, मैं अपने सामने वाली गली में रहता हूँ। I live peacefully here and now because I am an observer watching from the next street. अच्छा, बड़े सुकून से जिंदगी में रहता हूँ, मैं अपने सामने वाली गली में रहता हूँ। बहुत ही खूब। साक्षी भाव से जिंदगी जीनी सीख ली है मैंने। So this is another way of expressing one of the Indian philosophies. ऊपर जाने की गली को देख रहे हैं हम लोग।
नहीं, सामने वाली गली में क्यों रहता हूँ कर मुझे? सकता था। होने वाली नहीं, गली मैं पूछने पहला वाला तो था बट आई हेसिटेटेड। मैं भी यही पूछने वाला था, सामने गली में कौन रहता है? गली वो टू परमात्मा। अच्छा, परमात्मा रहता है। नहीं, वो शेरो शायरी वाले तो वो लिखते थे ना, उसके साथ उन्होंने लाइन और जो जोड़ देनी थी, क्योंकि सामने वाली गली गली में मेरी महबूबा रहती है। ऐसे ऐसे शेर लिखते हैं वो लोग। चलिए, तो अब थोड़ा सा भजन वगैरह कर लें, प्लीज। यस। तो उसके बाद फिर किसी ने भी और कोई भजन या मंत्रस करने हो, एनीवन, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। लाइब्रेरी भजन्स। मैंने कुछ तैयार नहीं किया। चलिए, When you have your car insurance with a Desjardins agent who goes the extra mile to हे गोविंद personalize करते your हैं। coverage, saying thank you doesn't quite cut it. म्यूजिक की आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी आ रही है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालु लाल। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालु लाल। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालु लाल। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे दयालु लाल। प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार।
समरथ अगम पूरण हे समरथ अगम पूरण हे समरथ अगम पूरण हे समरथ अगम पूरण मोह माया हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान नानक पार उतार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सुनाए। 445 आप सुनाइए कुछ उषा जी। अनम्यूट कर लीजिए। आप अच्छा सुना रहे हैं, आप ही सुनाए। चलिए फिर ये वाला सुन लीजिए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।
मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा होए। एक उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। Wonderful, very nice, very nice. बढ़िया। बहुत अच्छा। This is also टाइम meditation. है। ये पूरा meditation था पूरा। दोनों दोनों आपके गीत। या मेरे लिए ये जो म्यूजिक है ना, ये काइंड ऑफ वर्क्स एज अ मेडिटेशन। मैनी टाइम्स इफ आई फाइंड सम सॉन्ग रियली जिसमें मैं डूब सकता हूँ, सो देन आई फाइंड इट मेडिटेशन फॉर माई सेल्फ, विच आई यूज टू डू अ लॉट एट द टेम्पल। बहुत कम हो गया, आप लोगों के साथ में मौका मिलता है, बट इट्स quite a lot now, you know. So ये हमारी कोई I have some outlet here with you ये guys. हमारी थी आप। आई लव भजन, आई लव भजन। Yeah, that's good. अब मोहिनी जी से पूछ ले, वो कोई गाएंगे तो। मोहिनी जी, आप गाएंगे कोई भजन? She is on mute. Yeah, she's on mute. चलिए, तो हमारा टाइम हो गया 4:51. So we're gonna do a 10 minutes meditation session. So उससे पहले मैं जो मंत्र बोलता हूँ वो बोलूँगा, and then you just start meditation right after my mantra. Let me select my timer here. 10 minutes. Yeah, 10 is here. Okay, ready. अपना आसन साध लीजिए, बैकबोन सीधी, आपकी हेड उसके साथ सीधा, और अपना ध्यान अपनी श्वास के ऊपर रखेंगे। सो हम मंत्र जाप कर सकते हैं। सो इनहेल, हम एक्सहेल, और अपनी भ्रिकुटी के अंदर जो आज्ञा चक्र है उसके ऊपर गेज या इंटरनल गेज, जिससे कि वहाँ पर आपकी सेंसेशन शुरू हो जाती है। ओम नमो
भगवते तस्मै यत एतद् चिदात्मकम् पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय भी